in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Thank you very much. That is why each day under our administration of American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support for virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural, and very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states, and the popular vote, we won by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor, we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Thank you. Thank you.
National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country, we will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again right to the top, and export American energy all over the world.
We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. In other words, you'll be able to buy the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. And thank you to the auto workers of our nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously with their vote. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before to restore competence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents, something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. And we are going to bring law and order back to our cities. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. This week, I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Our armed forces will be free to focus on their sole mission,
defeating America's enemies. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. Thank you. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
Ambition is the lifeblood of a great nation. And right now, our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. I stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. In America, the impossible is what we do best. From Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America, promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love it so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. So to every parent who dreams for their child and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will win for you. We are going to win like never before. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again, including by people of religion, faith, and goodwill. We will be prosperous. We will be proud. We will be strong, and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken. And we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly.
and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا حلف اٹھا لیا، جس کے بعد انہوں نے افتتاحی خطاب بھی کیا اور انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ جنگیں اب ختم کر دوں گا، نئی جنگوں کا حصہ نہیں بنوں گا، اور خاص طور پہ اب ان جنگوں میں کسی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا جس سے ہمارے مفاد میں کسی قسم کا کوئی واشنگٹن سے موجود ہیں سینئر صحافی انور اقبال، سینئر صحافی ثاقب الاسلام اور سینئر صحافی فیض رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے رخ کریں گے انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور اقبال، بہت ہی جارحانہ اور بہت کانفیڈنٹلی انہوں نے یہ افتتاحی تقریب میں یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جنگیں ختم کی جائیں گی، نئی جنگوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک پہلا آرڈر دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جنوبی سرحد پر جو ہے وہ اس وقت نیشنل ایمرجنسی لگا رہا ہوں۔ کہہ سکتے ہیں آپ؟ جی اور اقبال صاحب۔ ثاقب الاسلام صاحب، کیا کہیے گا کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آج اسپیچ کی ہے، جو انہوں نے اپنی اسپیچ میں باتیں کی ہیں، کین ہی ڈیلیور دس آلسو؟ بالکل، جو اس وقت امریکی صدر بنے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ 47ویں صدر، وہ نہایت پاورفل صدر ہیں۔ ان کی جو دوسرا مدت صدارت ہوگا وہ ہر لحاظ سے مختلف ہوگا، کیونکہ ان کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے، اس لحاظ سے کہ ان کے پاس سینٹ بھی ہے، ان کے پاس ہاؤس بھی ہے، اور ان کے پاس سپریم کورٹ میں بھی جو کنزرویٹو جسٹسز ہیں ان کی اکثریت ہے۔ تو اس لحاظ سے انہیں روکنے والا کوئی اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جو پالیسیز انہوں نے، جن پالیسیز پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، انہی پالیسیز کے بارے میں انہوں نے کھل کر بات کی ہے۔ اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت وائٹ ہاؤس سے پہلا ایگزیکٹو آرڈر آ چکا ہے، پہلا پریس ریلیز ہو چکا ہے، جس میں امریکہ فرسٹ پرائورٹی کی بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہی باتیں جنہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں کی ہیں ابھی صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد، وہی بات انہوں نے اس آرڈر میں دہرائی ہے کہ اب امریکہ فرسٹ پالیسی ہوگی۔ امریکہ کو موسٹ پاورفل، موسٹ ریسپیکٹڈ اور موسٹ بگیسٹ نیشن کے طور پر دنیا میں منوانے کا ان کا جو ارادہ ہے، اس پہ وہ بالکل عمل کریں گے۔ اور میرے خیال سے آج ہی کچھ ایسے ایگزیکٹو آرڈر سامنے آئیں گے جن میں وہ ان تمام باتوں کا احاطہ کریں گے جن کا انہوں نے ایک بڑا ایگزیکٹو آرڈر پہلے ہی سامنے آ چکا ہے، جہاں انہوں نے ساؤتھرن بارڈر یعنی میکسیکو کی طرف بڑا اشارہ کر دیا ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ بٹ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کیا یہ اشارہ بھارت کی طرف بھی ہے؟ اٹس اے بیٹر واچ آؤٹ فار انڈیا؟ وہ دیکھیں، بھارت کی طرف تو مجھے نہیں لگتا کہ اشارہ ہے۔ جو انہوں نے ایمرجنسی لگائی ہے سدرن بارڈر پہ، جہاں سے بہت سے میکسیکو سے امیگرینٹس آتے ہیں امریکہ کی طرف، ان کو روکیں گے۔ میس ڈپورٹیشنز ہوں گی۔ 11 ملین اس وقت اللیگل، غیر قانونی طور پر مقیم امریکہ میں لوگ ہیں جن کو وہ باہر نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بارڈر سیکیورٹی سخت کریں گے، بارڈر سے کوئی بندہ یہاں نہیں آنے دیں گے، اور پالیسی رہی ہے کہ جو لوگ پکڑے جاتے تھے بارڈر کراس کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ کام نہ کر سکے۔ ابھی وہ ان سب کو واپس میکسیکو کی طرف یہ ان کا کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے امیگریشن کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، اس میں امریکہ فرسٹ ہے۔ وہ چاہے بھارت کی طرف اشارہ ہو، بھارت میں سے جو H1 ویزا پر بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ تو خیر ایک امیگریشن ان کا ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر وہ ہمیشہ سے اس رہے ہیں کہ امیگریشن قوانین کو سخت کرنا ہوگا۔ تو آنے والے 4 سال میں جو امیگریشن ہے وہ سخت ہوگی۔
से यहाँ आने वाले जो लोग हैं, चाहे वीजा पर हों, चाहे इमिग्रेंट्स हों, चाहे वो फैमिली इमिग्रेशन आ रहे हों या कारोबारी लिहाज से आ रहे हों, उनके लिए मुश्किलात तो होंगी। लेकिन मेरे ख्याल से जो इस वक्त सबसे अहम चीज है कि सदर ट्रम्प ने इमरजेंसी नाफिज कर दिया है सदर्न बॉर्डर पे, मैक्सिको के बॉर्डर पे, और उसके अलावा उन्होंने तवानी की इमरजेंसी नाफिज कर दी है कि वो वापस अमेरिका को अपने गुड ओल्ड अमेरिका की तरफ लेकर जाएंगे। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स का मैंडेट खत्म करने की बात की है कि अब जो सदर बाइडेन की पॉलिसी थी कि 2030 तक 50% जो कार्स हैं वो जीरो इमिशन पे चली जाएंगी, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादातर इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन वो कह रहे नहीं, हम गुड ओल्ड पुरानी पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां चलाएंगे और हम अमेरिका में ड्रिलिंग जारी रखेंगे, पेट्रोल निकालना जारी रखेंगे। साकिबुल इस्लाम हमारे साथ ही रहेगा सर। अनवर इकबाल भी हमारे साथ मौजूद है। अनवर इकबाल, आज बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जब से वाज़ेह तौर पे ये भी कहा गया कि अब सरहदों की हिफाजत हम करेंगे। गुज़िश्ता जो अखबार रहे हैं उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है जो बाइडन के दौरे इक़्तिदार पर। उन्होंने कहा कि हमारी सरहदों की उन्होंने हिफाजत नहीं की, दूसरों की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं। साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है, करप्ट इस्टेब्लिशमेंट का खात्मा किया जाएगा, फ़ौज अब सिक्योरिटी देगी, सरहदों की हिफाजत के लिए मुकर्रर होगी और अब वो फोकस अपने काम पर करेगी, किसी किस्म की सियासत में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। कैसा देखते हैं आप? अमर इकबाल साहब से राबता मुनक़ता हुआ है। साकिबुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। साकिबुल इस्लाम साहब, इसी सवाल के जवाब मैं आपसे चाहूंगी। सॉरी, सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने साकिब साहब, आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच की उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि करप्ट इस्टेब्लिशमेंट का खात्मा होगा, फौज अपने काम पर फोकस करेगी। जी बिल्कुल, ये तो उनका शुरू से ही ये पहले वाली हुकूमत में भी यही बात उनकी रही है कि जो हुकूमतें हैं वो एक दूसरे को गिराने में, हटाने में लगी रहती हैं, और खासतौर पे उनका यही था कि वो पिछला इलेक्शन जीते थे और यही वजह है कि वो इस दफा अमेरिकी जो हुकूमत के इदारे हैं उनकी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम से, डॉज के नाम से एक इदारा भी कायम कर दिया है, जिसकी सरबराही उन्होंने जो एक्स के सरबराह हैं और इलॉन मस्क उनको दी है। साथ में इंडियन अमेरिकन है रामास्वामी जो कि कांग्रेस के रुकन भी हैं, वो दोनों मिलकर इस इदारे को देखेंगे जो कि गवर्नमेंट के इदारों को, गवर्नमेंट की जो तकरीबन 400 से ज्यादा एजेंसियां हैं उनकी निगरानी करेगा। और अकॉर्डिंग टू इनर सोर्सेज उनका कहना यह है कि वो इन एजेंसियों की तादाद को घटाकर 99 पर ले आएंगे, यानी कि 99 एजेंसियां रह जाएंगी। कोशिश होगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन देख तो वो उनका मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके खर्च को कम किया जाए, उस मद में होने वाले जो बजट है उसमें कटौती की जाए। उस लिहाज से जो तमाम गवर्नमेंट एजेंसियां हैं वो इस वक्त उन तलवार लटक रही है कि जो नई गवर्नमेंट, नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी डोनाल्ड ट्रंप की, वो गवर्नमेंट के इदारों की सही तरीके से उनकी जो है वो उनकी बजट में कटौतियां करेगी और उनको देख रहेगी कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा सर कि डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा जो सदारत का टेन्योर आज से शुरू हो गया है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप इसे कैसे देख रहे हैं? इट वुड बी वेरी चैलेंजिंग मेरे हिसाब से, इसलिए खास तौर पे देखिए अमेरिका का जो इंटरेस्ट था जब तालिबान वहां पर थे, वहाँ तालिबान की हुकूमत थी और वो वहाँ पर अफगानिस्तान में फौजें थी, उस वक्त उनको पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत होती थी क्योंकि ज़ाहिर हमारे से मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट भी था। उसके बाद हमारे इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होती थी, दे वांट सपोर्ट और कम्युनिकेशन भी हम कर लेते थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ऐसा लोकेशन भी है कि कोई भी पाकिस्तान इग्नोर नहीं कर सकता, खास तौर पर इसके हम एक इस्लामिक और वाइड न्यूक्लियर कंट्री हैं। हमारे ताल्लुकात चाइना से बहुत अच्छे हैं, हमारी जियोग्राफिक लोकेशन बहुत अच्छी है, हमारी बैटल हार्डन आर्मी है, इसलिए पाकिस्तान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, इट डिपेंड कि हम अपनी सियासत कैसे लेके चलते हैं, कैसे अपना होमवर्क करते हैं। हम श्योर कि हमारे फॉरेन ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में पहले से अपनी रिस्पॉन्स तैयार करनी होगी। जो जो उनकी क्वेरीज होती रही हैं, उनकी स्टेटमेंट आती रही हैं, उनके एडवाइजर की स्टेटमेंट आती है, वो हमें अपनी अच्छे तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंट रीजन का प्लेयर समझे, क्योंकि अभी वो सिर्फ इंडिया को समझते हैं कि प्रिज्म से वो पाकिस्तान को देखते हैं। और हारिस साहब, आपको क्या लगता है कि साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें कितना चेंज आएगा? बिकॉज रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया, इट्स 70% ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ ट्रम्प।
हारिस नवाज साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि साउथ एशियन जो रीजन है इस पे इसका क्या असर आएगा, क्या चेंजेस आप देख रहे हैं इसकी पॉलिटिक्स में? बिकॉज 70% ऑफ फॉरेन पॉलिसी कवर करता है रशिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया इन दिस रीजन। देखिए, इसमें ये बात है कि हमें अपनी पॉलिसी बहुत अच्छी बनानी चाहिए, क्योंकि इस रीजन में हम तकरीबन 3 जो है वो न्यूक्लियर पावर हैं, जिसमें रशिया है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बड़े 4 कंट्रीज हैं के अंदर। हमें अपने रीजन में स्ट्रांग होने की जरूरत है। हमें चाइना से ताल्लुकात रखनी है, हमें रशिया से करनी है। वी नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये असूल है। लेकिन क्योंकि यूरोप और अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, हमें कोई डाउट नहीं है, हमें उनसे तगल्लुकात अच्छे भी हैं, ट्रेड रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हमें उनसे हर हालत में कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए और अकोमोडेट करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को कभी भी एज ए सॉवरेन स्टेट अपनी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। हमारी हुकूमत को वो चाहना चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अंदर है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई एम श्योर के ट्रम्प के पास इस सब बहुत और बड़ी चीजें होंगी। नंबर 1 प्रॉब्लम है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ भी देखिए हमें टेररिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, अफगानिस्तान जो हालात हो रहे हैं, इसलिए बट ही विल टेक सम टाइम। अभी वो आएंगे तो 3-4 महीने हमले के दौरान हुकूमत में अब कुछ नई और मुस्बत तब्दीलियां रुनमा हो सकती हैं, जिससा कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अब नई जंग नहीं होंगी, उनका हिस्सा भी नहीं बनेंगे। इसी पर गुफ्तगू हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, जबकि हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन डीसी से मौजूद थे साकिबुल इस्लाम साहब। बहुत शुक्रिया आपका।